दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। सरदार उधम में कुछ सीन्स थे जहां आप बहुत डिजेक्टेड एक्टिंग कर रहे थे। आई रिमेंबर यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट इन वन सीन। दैट्स द सीन दैट स्टेड विद मी। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग But अबाउट। which part? Like the I think younger जहां वो portion or? नहीं, अर्ली पोर्शन जहां वो या तो आई थिंक जेल से जस्ट निकले हैं। इट वाज वन ऑफ द अर्ली पोर्शंस एंड माय थॉट वाज कि क्या विकी कौशल ने भी इतनी ज्यादा डिजेक्शन देखी है लाइफ में टू बी एबल टू एक्ट विद दैट काइंड ऑफ पेन। एंड प्लस आपके फिल्मों में ना बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत अलग रीजंस के लिए कनेक्ट करते हैं, बट अ लॉट ऑफ गाइज कनेक्ट विद यू बिकॉज आप बहुत साइलेंट मेल पेन को अच्छे से डिपिक्ट करते हो। आई डोंट नो इफ यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। I got what you're saying, but I've never seen, like, obviously I can't objectively see my performances like that. Maybe I'm giving you engineering bro perspective. Maybe. Don't mind the Sounding good to me. पर एक साइलेंट मैस्कुलिन पेन दिखाई देता है आपके परफॉर्मेंसेस में जिसे ब्रोस कनेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई यू हैव बोथ अ फीमेल एंड मेल फैन फॉलोइंग, ऑनेस्टली। Okay. But I think in Sardar Udham, if I just pick that example out, all that I was thinking were, like, at the later stages when I'm like late 30s, 40, and when I'm like in London and roaming around, the one demarcation, like when I feel ki I'm overthinking a character or I'm making like too many ideas and theories in my head, I like to simplify things, and then I just put like one word, like I just put like one block idea. So I remember during Sardar Udham, because it was such a silent kind of a portrayal with not many dialogues. The first 20 minutes of the film, you don't even hear him talk. So I just said ki yaar, jab tak he's not done what he's wanting to do, imagine like there's a weight of 2000 kilos on your shoulder. You're carrying a lot of weight. And I said ki let me just start with just literally feeling a physical weight. I know it's more like a mental weight, but let me just do everything where I feel like a physical weight on me. And when I play the 19-year-old, just get that weight off. That's how I kind of just in my head just simplified in terms of कि अच्छा यार ये दो लोगों में एक broad क्या फर्क है. And that's where it started from in a physical form, and then obviously in a mental form. Men in general are conditioned to kind of suppress feelings and like कि ठीक है यार होता है ठीक है बस चल रहा है भाई. हाँ. So वो एक पता नहीं, वो शायद वैसा भी है, but I don't know. I can't dig deep in that because how it lands on a viewer is very subjective. Okay. मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि YouTube को चलाने के लिए हमें डेटा को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है. Yeah, sure. कि who should we get next on the show? What subject should we talk about next? I'm assuming it's something similar. I know it's something similar in the film world. मतलब एक concept को create करने से पहले thought. Yeah, of course. Thoughts जाता है. Yeah. मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरा सवाल नहीं, मेरा इनपुट ये है कि एटलीस्ट आई एम नोटिसिंग जेन ज़ीज, मिलेनियल्स भी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आजकल. दे फील कि वी शुड हैव बीन टॉट इवन मोर अबाउट इंडियाज हिस्ट्री. शायद इसलिए I feel कि automatically maybe the film world might go on a bit of a historical tangent. क्योंकि audience का demand है. That's why we've gone on a full historical tangent. Usually what happens is, at least I don't know what the textbooks are saying today. I don't know how they are like syllabus wise, but जो मुझे याद है, जो हमें पढ़ाया गया था, जितना याद है, इस कि यार हमें से बता like I said कि वो फर्क होता है कि क्या हुआ in terms of incidents, just to cover a wider, because history यार एक टेक्स्ट बुक में भी खत्म करना बहुत मुश्किल है. पर हम स्कूल में इट्स मोर कि यार एनेक्डोटल कि यार ये हुआ था, फिर इस साल में ये हुआ था, फिर इस साल में ये हुआ था. बट like the thing that hit me the most when we were shooting सरदार उधम was कि यार जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जिसमें इतने लोग मरे, और वो हमें सवाल पूछा एग्जाम में, हमने लिख दिया, बट वी डिडंट रियली फील इट. वी डोंट नो व्हाट इट रियली फील्स टू लूज दैट मेनी लाइव्स ऑन अ सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड इन वन नाइट. सो वो उसका इम्पैक्ट रियलाइज कराना इज ट्रू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. ऑल्सो द वे दैट सीन वाज शॉट, बहुत कुछ फील होता है आपको एज एन इंडियन जब आप वो सीन देख रहे हो. It's probably one of the most difficult scenes to watch that I've ever watched in my life. It was one of the probably the most difficult scene to perform as well. It was because पूरे करियर में. Yeah. पूरे करियर में. Yeah. बताओ. It was यार
It was because of course I was prepared for a few things, but there were certain things which I was not prepared for on a deeper level. Because जो हमने वो sequence पूरा shoot किया, वो तकरीबन like doing it for like 20 days. And एक चीज जो मुझे पहले ही वार्न की थी सुजीत दा ने, वो कि यार डमी बॉडीज नहीं होंगे, इट विल बी रियल बॉडीज. एंड मैं तुझे छोड़ दूंगा. Like there was a 3 camera setup, out of which 1 camera I never knew where it was. Out of the 2 cameras, like they would light the whole ground, and then there was no like कि अच्छा यार next shot we have this much time so you rest it out or whatever. Once we are on the ground, we are on the ground, and then it's just like changing angles and whatever. मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा Yeah. जिन लोगों ने वो सीन नहीं देखी. जलियांवाला बाग इंसिडेंट को डिपिक्ट किया गया quite graphically in that film, and I think it's actually the highlight of that film, the way that they've done justice to that incident. And the second aspect is what you're talking about right now, जहाँ सरदार उद्धम का कैरेक्टर वहां Is the पहुंचता है aftermath, इंसिडेंट के yeah. बाद और बॉडीज को उठाता है जलियांवाला बाग से, बच्चों की बॉडीज को उठाता है, and that whole stretch is very very intense to watch as a viewer. Yeah. Please continue, bhai. So when we started shooting, obviously ये बताया गया था कि जैसे मैंने कहा कि there won't be any dummy bodies, there'll be real bodies, and I don't want you to rehearse how to pick them up. I want to see a 19-year-old not knowing how to pick them up, so struggling how to pick them up and then getting tired and whatever. So we kept shooting, like I said, for like 20 nights, where there was the ground, then taking to the hospital, the streets, the houses, everything put together. The night was divided into 6 stages because there was a lot of blood coming on me and everything. So in terms of like technicality wise, continuity had to be maintained and all of that. But let's just say A, B, C, D, E, F, whatever. So wo stages mein, like we kept shooting. And in fact, all the people who were lying down there, they were also told ki I can come and pick up anybody. So you have to lie down, and only brief that was given to me was you genuinely search for people कि कोई जिंदा है. अगर कोई हिलता हुआ देखा, consider them injured and you would try to save them. That was the brief given to me. And the camera will follow you. Don't worry about anything. And it became like a stage for me. And what I was not prepared for after doing it like many times was that somewhere in the middle, it just hit me that there was a boy actually doing that one night. And that hit me very strongly. Like I could not sleep after going back home. And I would sit with Sujit Da also, and I would be like, "Sir, मेरे को नींद नहीं आ रही." And he's like, "I understand." But you know, but we kept doing that. We kept doing that because we felt कि यार कुछ तो सही हो रहा है अगर हमें ये feel हो रहा है. And everybody, like that night, like over there, we shot in Amritsar, and the people were very cooperative. पूरी रात ठंड में वो लेटे रहते थे because they knew what we were trying to recreate. So they were very supportive, and it took a lot of team effort. But just as an actor, it was like it just grounded me a lot. Like I thought that happened with me when I was shooting Masan and prepping for Masan, when I would spend time at the ghat, Mashan Ghat, and see dead bodies getting burnt. But this was a little, I don't know, strangely deeper than that. And Deeper than? yeah, Okay. yeah. Because there was agony, there was pain, there was trauma, there was, and I had to do that all feeling like a child, like because in the film also you see him like before that incident not really being very like revoltish about freedom or whatever. He was just a kid living his life, and but that night changed Sardar Udham Singh ji, and that night, kind of the depiction of that night kind of just like made me realize कि यार अगर हम ये कहें कि जाने गई थी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो उसका एक जो इम्पैक्ट मुझे बहुत, मतलब शायद ही पहली बार उस डीपर सेंस में फील हुआ था कि उसका मतलब क्या होता है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज कहना चाहूंगा. आई फील कि यू आर अ वेरी ब्लेस्ड मैन टू बी एबल टू प्ले सच कैरेक्टर्स. आई एग्री. आई फील दैट. सो आई फील दैट रियली. सोचा इसके बारे में कभी? क्योंकि सीइंग योर करियर फ्रॉम द आउटसाइड, उरी, सरदार उद्धम और सैम बहादुर, जस्ट इन 3 फिल्म्स की वजह से आई फील कि यू आर इन मेनी वेज अ चोजन वन. I'm genuinely saying what it feels like from the outside. शायद इसलिए people are rallying behind you also. I don't know, but I do feel blessed to get these opportunities because यार जब like we discussed, because we've discussed engineering days, engineering जब छोड़ी थी,
एक्टर बनना था. 2009 I'm like, okay, let me just do an acting course. And that too was like, you know, I had said कि यार मुझे एक्टर बनना है, बट मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट टाइम वाज आल्सो नॉट द टाइम लाइक वी हैव टुडे, वेयर एक्टर्स, इवन इफ यू डू अ फिल्म and if your work is good, you will be like, there'll be curiosity around you कि यार ये कौन सा नया एक्टर आया है. वो टाइम, वो दौर ही नहीं था, you know, वो बहुत ही हीरो वाला दौर था, लॉन्च होने वाला दौर था, whatever. तो तब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था. बट उस जर्नी से जब स्टार्ट करके देन यू स्ट्रगल एंड देन यू गिव ऑडिशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, थिएटर एंड एवरीथिंग. उसके बाद जब आज देखते हो कि हाँ यार तुम्हें ऐसे रोल मिल रहे हैं और ऐसे डायरेक्टर्स आप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, एंड फॉर दीज लेजेंडरी रोल्स एंड कैरेक्टर्स, it really feels like a blessing. because यार ये सरदार उधम सिंह जी हों, चाहे सैम बहादुर हों, मैंने इनकी कहानियां घर पे हमने सुनी है यार, हमने डिस्कस की हैं, और फिर वो रियलाइज ही नहीं होता कि यार आज मुझे वो मौका मिला है उनकी जिंदगी को समझने का, और फिर लोगों तक वो कहानी पहुंचाने का एज दैट गाय. वो रेट्रोस्पेक्ट में हिट होता है कई बार, पर वो जब हिट होता है तो बड़ा स्ट्रांगली हिट होता है, एंड यू फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू फील कि यार जो भी हो रहा है यूनिवर्स में, गॉड इज रियली टेकिंग केयर ऑफ यू. यूनिवर्स, किस्मत, गॉड, ऐसी चीजों की बातें बहुत होती है शो पर. एंड मैंने जाना है जो मेगा सक्सेसफुल लोग होते हैं, किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है. डू यू अग्री? ऑफ कोर्स देयर इज हार्ड वर्क, वो बेसिस है, वो कांस्टेंट है. हाँ, नहीं, आई एम अ स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग बिलीवर इन डेस्टिनी एंड कर्मा. I'm a super strong believer in that. Like, and it's like immovable. Like at times especially at times when I don't get what I really want to, I really have now learned to take it as a blessing, because I literally have now when I look back and I feel कि यार वो फिल्म नहीं मिली थी यार जो करना चाह रहा था and जो होने वाली थी. But then now I see and I'm like, thank God नहीं हुआ था यार. You know, क्योंकि उसके बदले ये सब था. So now I am really like, I know that if your hard work is there, आपकी नीयत साफ है, सच्चाई से काम कर रहे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा. और कई बार आपको समझ नहीं होती कि आपके लिए क्या अच्छा है इस वक्त. But I just live with that faith that there's a stronger entity or force or whatever taking care of you. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त.